तो कल कीर्ति, गुड मॉर्निंग और एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज बात करेंगे क्रिकेट की। इंडिया में क्रिकेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बहुत सारे सॉल्यूशन सब लोगों के पास होते हैं। हर एक आदमी के पास क्रिकेट का सॉल्यूशन होता है। तो मैंने सोचा कि रादर देन गोइंग टू ए जर्नलिस्ट आई मस्ट स्पीक टू ए स्पेशलिस्ट लाइक यू, जिसने बहुत क्रिकेट खेला है एज ए ऑलराउंडर। वो ठीक है, आप आर्मी में चले गए तो प्रोफेशनल नहीं खेल पाए, बट अगेन एज ए कोच और एज ए प्लेयर आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे खासे हैं और नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होगा कि T20 एक स्पेशलिस्ट सा गेम हो गया। T20 50 ओवर्स वाला हो गया, टेस्ट मैच हो गया। तो T20 अपने आप में एक बिल्कुल ही, डू यू थिंक इसके लिए स्पेशलिस्ट टीम होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट प्लेयर्स होने चाहिए, और शायद हमारे पास वो नहीं है? ओवर टू यू, योर ओपिनियन ऑन दिस। Good morning, sir. Sir, quite a large number of countries have resorted having a separate T20 team, which is quite different from the test matches and one-day cricket teams. Basically, because T20 requires younger blood, and so they want these players that who are young, who are fearless. They should be selected for their T20 teams. But you can't go just for the youth or a fearlessness. You have to have a consistency also. If you see the present Indian T20 team is world number one team in the world, is number one team in the world. So for a team has to be number one, that means you had given a consistent performances over last 12 months. The thing which makes cricket most exciting is its unpredictable nature. One good shot, one good catch, one good run out, one good over can turn the match upside down. And it happens so many over the years. You can see several matches where it has happened. If you remember, the Indians were underdogs in 1983 World Cup finals when they were playing against West Indies. And West Indies was going great guns, but one good catch by the Kapil Dev suddenly turned the match towards India. So these things do happen, and the loss to the England, particularly by 10 wickets, was most demoralizing and very sad moment for me. But I still believe that time has not yet come to go to make drastic changes. There are certain changes definitely required, which should be brought in. The youth should be brought in gradually. Maybe one or two youths can be brought in where the bulk of this team remains, and certain youth are given so that they become experienced, and gradually we can keep on replacing those players. That would be my idea of changing this concept rather than having an entirely separate team. अच्छा कल कीर्ति, एक बात बताओ मेरे को। हम सब लोगों ने द्रविड़ को खेलते हुए देखा, बड़ा मतलब ऑनेस्टली सही बात बताएं आपको, तो छक्का तो वो कभी मारता नहीं था। मतलब चाहे वो 50 ओवर्स वाला हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो। तो काफी लोगों का ये कहना है, और अब क्रिटिसिज्म आ रहा है प्रेस में भी, मीडिया में भी, कि दिस जेंटलमैन वाज ए बेसिकली डिफेंसिव बैट्समैन, गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट, बट ही वाज नॉट ए गुड कैप्टन, एग्रेसिव कैप्टन वो कभी भी नहीं था। तो लोग इस बात को एक्चुअली एम्फेसाइज कर रहे हैं कि द्रविड़, मे बी दैट ही इज अ गुड कोच फॉर probably 50 overs match or probably test match, but he is not the right aggressive coach for T20. What do you say about it? I fully agree with this, that Dravid is basically a defensive player, has a defensive mindset. If you see certain decisions in this T20 World Cup, our focus was on to strengthen our batting, and which led to our weakening of our bowling to a great extent. We all know that Yajendra Chahal is our best bet as a spinner, but he was not given a single match in entire tournament. Reason was he wanted to strengthen our batting, so we kept on playing Ashwin and Akshar Patel instead of Yajendra Chahal. So similarly, if you see when India lost in last World Cup, there was a thought process that India would bat more aggressively, where even if they lose 2-3 wickets in power play, they will keep on going on aggressively. But you see in this World Cup, that concept was not applied. India was very, very defensive in the power plays, and which has definitely led to loss, particularly if you think of the semi-finals, where India in the power plays was only about 30 or 36 or some odd runs, which are too less, whereas
England in the power play scored 63 runs. So that they completely changed the concept in those 6 overs only. So ओके definitely defensive mindset which needs to be changed. ओके अब जो एवरेज एज की बात मैं कर रहा था, एवरेज एज इनकी 30+ है, आई बिलीव इट इज 30.6, और कई प्लेयर हैं जो 30 से ऊपर है, जैसे विराट कोहली तो ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल है, और वो जो सूर्य यादव है वो भी 30 से प्लस है, बट प्रॉब्ली ही जस्टिफाइड। बट उसके अलावा आप देखो भुवनेश्वर कुमार, ऑफ कोर्स ही वाज एवरेज, मोहम्मद सैमी अगेन 30+, रोहित शर्मा, अश्विन, राहुल, और ये सब लोग 30+ हैं। और T20 के लिए मुझे काफी हद तक ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि ये इनके फील्डिंग में स्पेशली, और फील्डिंग T20 में अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और ये लोग मेरे ख्याल से तो T20 के लिए कर्नल कीर्ति, मुझे नहीं लगता इनका टाइम अभी रह गया है, एक्सेप्ट प्रॉब्ली समबडी हु इज प्रूविंग कंसिस्टेंटली लाइक विराट कोहली या फिर वो सूर्य। बाकी का मैं समझता हूं कि दे शुड बी आउट एंड न्यू प्लेयर्स, यंगर प्लेयर्स शुड बी ब्रॉट इन। व्हाट डू यू से अबाउट इट? आई फुल्ली एग्री विद यू सर। अगर आप पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक देखो, उनके जितने 4 फास्ट बॉलर उन्होंने खिलाए, सबकी एज 20 से 25 के बीच में थी। वेयर इंडिया में पिछले आईपीएल में उमरान मलिक उभर के सामने आया, जिन्होंने कि 155 की स्पीड से गेंद फेंकी, बट अनफॉर्चुनेटली, और आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट बीइंग ट्राइड। You need to have one fast bowler in the team which can threaten other players like the Pakistanis does. They had scored only 130 odd runs, but still they make life difficult for the England players because of their bowling. All 4 bowlers were really bowling fast. So I fully agree with you that Bhuvneshwar Kumar is past his prime. Is no longer same is the case with Ashwin. He definitely doesn't belong to this T20 team. Sami also, to quite extent, is old. Rohit Sharma also is हाँ past. बिल्कुल। You are right that there are a lot of young players in India. You can have Ian Kishan, you can have Prithvi Shah, Umar Umar Khalid Ayers. Also, there are a lot of good players which can be actually included into the team. ओके आपको क्या लगता है कि हम क्रिकेट में, बिकॉज हमें एक ब्रांड इमेज अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की बनानी है, तो शायद उस चक्कर में हम स्टार्स को सेलेक्ट करते हैं रादर देन टीम। ये जो T20 की टीम है, ये तो ऐसा लगा कि स्टार्स हैं जो अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करने वहां पे गए हैं, और वो वहां पे जाके डिफेंसिव हो गए, और जहां भी ये जीते, पाकिस्तान से जीते, बांग्लादेश से जीते, जब भी ये जीते कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही, जैसे विराट कोहली की रही पाकिस्तान के अगेंस्ट में, या फिर प्रॉब्ली उसकी सूर्य यादव की रही शायद उसमें बांग्लादेश के अगेंस्ट में, इवन तो इंडिविजुअल स्टार प्लेयर्स हमने एक इकट्ठे कर लिए, और रादर देन वी प्रॉब्ली कुड हैव सेलेक्टेड ए यंग टीम जो बिल्कुल एग्रेसिवली परफॉर्म करती। स्टार कोई बंदा अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही बनता है, ऐसा तो नहीं होता कि स्टार सिर्फ नाम से बन जाए। जो स्टार है उसने परफॉर्मेंस दी है सर ओवर द ईयर्स, सो दैट ही हैज बिकम स्टार। सो मेरा मेरा मानना यह है कि एक राइट मिक्स होना चाहिए सर टीम में, जिसमें कुछ यंगस्टर्स हों और कुछ established players हों, like विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, they can still give lot to this Indian team. But at the same time, you require young players also to be brought in so that they get experience while these stars are there. They can learn from them that how to handle pressure. Some of the younger players have started doing very well. Hardik Pandya is doing very well. Arshdeep Singh has bowled wonderfully well. So there are players who have done well. So we need to move forward. But this one loss should not change our entire thought process, our entire team. I believe because we were the number 1 team in the world with the same set of players. It is not that we are playing a different players here and जब number 1 बनने के लिए हमने अलग players को इस्तेमाल किया। number 1 बनने के लिए हमने इन सब टीमों को हराया है। We have not been able to win this World Cup. That is besides the point. ओके अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब लास्ट क्वेश्चन है ये, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं तो खैर क्रिकेटर नहीं हूं, लेकिन जितना भी इंडिया में तो हर एक आदमी क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखता है, तो मुझे बाकी गेम्स का है, क्रिकेट के बारे में कम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि T20 में फील्डिंग सबसे ज्यादा क्रूशियल है। और वो एक ऐसी जगह थी, स्पेशली जो T20 है उसमें 1 रन रोकना या बाउंड्री रोकना या छक्के रोकना, दैट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। और उसमें
मुझे ऐसा लगता है कि फील्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए यंग प्लेयर्स की जरूरत है. सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? I fully agree with you that fielding is a very, very important aspect of game in T20 World Cup, T20 games. And there are two players, particularly if I name Ashwin and Sami, who are not good fielders, who have to be hidden in the ground so that runs can be saved. So definitely, if you have players who are fit enough, who are young, the fielding can improve. ओके. एंड व्हाट अबाउट द फास्ट बॉलर? आपने उमरान मलिक की बात की, उसके अलावा और कोई बॉलर है जो आपको नजर आता है कि जो T20 में या आगे T50 में उस There तरीके are से? so many fast bowlers who are doing well in IPL. Now, unfortunately, Bumrah was not there. He was injured. So that was a loss for India because Bumrah is right now the world's number one fast bowler as far as on all the three formats of the game. Umran Malik is another one. There is Mohammad Siraj, who is a young, who bowls well. He could have been tried. So there are a lot of fast bowlers. There is no dearth of fast bowlers, but provided I think there is a need to groom them and give them a chance. Thank you so much, Colonel Kirti. Wonderful insight, and I think the people should pay attention to all the points which you have mentioned. So you have just heard Colonel Kirti Sharma. He has been a player at university level, inter-university level, and he has got a very good knowledge about the game and the coaching in particular. Okay. Now, England, what they have done? They have got a separate T20 team. They have got the separate T20 coach, and all of you or all of us should agree that we must have a separate T20 coach, because Rahul Dravid, he has been a marvelous test player, but obviously he was not very aggressive. For T20, you require a aggressive young team. There must be seniors in the team to guide, but it has to be aggressive young team from the first ball in the match. I hope you liked this interview, this narration. Thank you so much. I will see you in next video. Thank you.